Hey, welcome to Avyakti Parivar. Today is day 5, Purification of Sanskars. And now we'll listen to Mohini Didi. ओम शांति। Om Shanti. संस्कारों का शुद्धिकरण। Purification of शुद्धिकरण Sanskars. में In purification, संस्कारों में in हमारे Sanskars, गुण हों, वैल्यूज हों। we should have values ये and संस्कार virtues in those क्योंकि sanskars. So that is very अगर important हमारे संस्कार because if our भले बुरे हों, sanskars are full of virtues and तो values, सबके लिए for अच्छा example, बोलना if we या think किसी good को बात about कहें or we are a well wisher बहुत of आसान everyone, लगता if है। we have patience, if we have love. तो इस प्रकार से अगर हम So, in this way, if चाहते हैं we कि समय पर want हमारे that at the right विचार जो time, हैं that the thoughts that we वो have, उचित हों, they should be appropriate. जिस समय पर मुझे धैर्यता चाहिए धैर्यता के At साथ the चलना time that I need और जिस patience, समय I should मुझे have the thoughts of patience. And at the कर्म time करने के लिए when to do the अविचल की actions, प्रेरणा है what do I have वो to समय do? चाहिए वो संकल्प If I चाहिए need those thoughts, then I should have those thoughts. उसके लिए दो तीन So, for that, विधियां हमको अपनानी two पड़ती or हैं three methods that we have to apply. खुद One, we have अपना to अभ्यास करना होता है we have to do our practice जिसमें मुझे हर in गुण को which लेकर के I have to take जैसा every जैसा महसूस होता virtue. है Like कि we ये all ऐसा है वैसा feel है that if a उसमें situation comes उत्तेजित हो जाते हैं in which we get um, या कोई excited, ऐसी परिस्थिति आती है or कि थोड़ा if सा a situation अंदर comes से and a little bit क्रोध inside आने लगता है we get a little bit और कोई angry, ऐसी परिस्थिति आती है or certain कि situations मन come that the थोड़ा mind सा शांत होने लगता है becomes peaceless or तो anxious. जैसी परिस्थिति So, होती है whatever is the उसका situation, गुण in that situation, क्योंकि गुणी शक्ति है that kind of virtue is needed because virtue मनुष्य is a के पास power. गुण है Human beings, परंतु शक्ति when की they have कमी है weaknesses, so and that is why the mind is weak. So, what is the power? Power is of the virtue. उस So, virtue की जरूरत which है power is needed? तो That मुझे virtue is महसूस needed. होता है अपने जीवन So, में I feel in my life क्रोध तो that नहीं आता है I don't get angry, लेकिन अधीरता हो but जाती है impatience can be तो there. मुझे जीवन में क्या करना So, चाहिए then what do I need to do? I don't have to get मैं disappointed, कहीं नहीं जा रहा है or मैं would I would मेरे say, को नहीं or would आता I है say, oh, I मैं कर cannot नहीं do it. सकता It's not लेकिन अगर उस possible. समय में But if at अपने that को time ध्यान आया और फिर मैं if दिन I में pay ध्यान attention लगाता and हूँ throughout the day कि मैं I pay धैर्यता नहीं attention खोऊंगा that I am not going to lose my कई बार ऐसा patience. हो जाता है So कि many बहुत समय times लग it गया happens that a lot of time has परिवर्तन नहीं passed, हुआ change is सुधार not की स्थिति coming, नहीं है something is not तो निराश हो reforming. जाते हैं So we get disappointed. और जैसे कि अधीर हो जाते हैं और Just फिर like we धीरे become रफ्तार से impatient, and when we become उनकी बातों को impatient, so how does the mind और तेज work? रफ्तार से चलते हैं Mind works with a lot of उस समय तो with a बहुत high अच्छा speed. चले लेकिन बहुत So it needs अधैर्य हो patience जाता at है that और time. बहुत I mean, the विचलित हो mind जाते becomes हैं impatient, meaning a lot of लेकिन thoughts come. अगर उस समय But कहें if at कि that मैं time थोड़ा I सा रुक say, जाए I need और patience, तो धैर्यता का have जो गुण patience, है so the virtue of वो अभ्यास patience से आता है that comes बेशक through नहीं practice, आता है that doesn't come right लेकिन away. आप धीरे धीरे But if देखेंगे you उसका will see फल slowly and आपको slowly बहुत that the मीठा fruit लगेगा of patience is very sweet. लेकिन कई बार ऐसा होता है But कि so many times it जहाँ happens धैर्यता नहीं चाहिए wherever we वहाँ don't need रफ्तार करके patience, बैठ जाते हैं we और become फिर जहाँ patient, एक्शन लेना चाहिए and वो where I नहीं need to लेते take action, I don't take it. गुणों का संतुलन So the balance of these virtues जीवन में बहुत जरूरी है is very और आप important in देखेंगे our lives. And in कि that you will see, इन गुणों का करने के लिए so in order व्यक्तिगत um, साधना और अभ्यास है to get a group of virtues, I have my own practice. And also, whosoever is around me, in those people also, I should always किसी एक see का गुण दिखाई नहीं देता their मेरे पास specialities. जो I है should not be वो looking at their weaknesses. So किसी many को times it नहीं दिखाई happens, we देता get to know that this one has मैं this अपने weakness, ध्यान नहीं but दूंगा I should not pay attention on that. गुण देखूं I should see their specialities, their virtues.
तो समझते हैं कैसे? So do you understand that how make this nature, make this your nature and have this habit, कि मुझे make this सबको your sanskar that I just have to say गुण देखना है, others जैसे वो virtues देखेंगे and वैसे specialities. The हम more you see the specialities, and so whatever speciality and virtue you take from outside also, and then from within also, you have those values. बाहर से देखेंगे So when you see those sanskars from outside and when you have it within वैसा you, ही रहता है, it's तो क्या होगा? so what will happen then? संकल्प कैसे आएंगे? What kind of thoughts will you have? It would be very elevated thoughts. स्थिति कैसे So आएगी? what kind of state एक तो the आपने mind बोला would be in that with that? जो So one, संतुलन you are बना रहे, progressing, and then the balance of all the virtues is increasing. And third, हमारा मन you're feeling yourself that my mind is now so peaceful and elevated. तो ऐसी मूर्त बनानी है So we have to make that जो image. धैर्यता की मूर्ति हो, That is an image of ऐसा patience. हमको अपनी जीवन में Such we अपने have, स्वरूप को such should be our जिसमें nature संतुलन and हो, embodiment in our lives, that we तो have जो हम 2-3 मिनट full, we are full of all virtues. So now for 2 to 3 minutes we'll little bit will practice कि मन को that. शांत करें, अंदर Stabilize your mind in the घुल forehead. जाए कि Draw your attention in between the forehead, चैतन्य that I अजर अमर am a living, immortal, अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। very subtle soul. मन, बुद्धि, संस्कार, Mind, intellect, and आत्मा की जो sanskars विद्याएं हैं, are आत्मा की योग the विद्याएं हैं, faculties and specialities जब मैं of the अपने soul. स्वरूप में टिकती हूँ, When I stabilize myself in my शांत स्वरूप में टिकती हूँ, in the तो जो embodiment मुझे of as the दिखाई देता embodiment है, of peace, then the सब thoughts, कुछ जो होता है intellect, everything that we have, वो सब शांत, all प्रेम that और becomes संवेदनशील हो peaceful, जाती है। loveful, and अगर we हम get the attainment of bliss through that. बीच बीच में If throughout the day इसी प्रकार का अभ्यास करते रहें, we keep on practicing तो हमारे संस्कार, this in हमारे विचार, between, so then हमारी our शक्तियाँ, nature, our हमारे sanskars, संबंध, our thoughts, हमारे our जीवन relationships, our कितनी life श्रेष्ठ, will be so कितनी elevated ऊंच होगी। and अब इसमें कोई भौतिकता, will be so high. ऐसा नहीं कि संसारिक रूप से So it हम isn't काम नहीं like कर पाएंगे, that we won't be able to परंतु work in this world or we आप won't get देखेंगे success, जितना but you will आप see अपनी आत्मिक क्षमता बढ़ाते जाएंगे, to the extent you increase the मन की capacity बुद्धि को of your बढ़ाते जाएंगे, soul, the power of the mind and तो आप intellect, to that देखेंगे कि extent you will सारा see that भौतिक रूप से भी, संसारिक in व्यवहारिक रूप in से a भी worldly way also, आपके जीवन in में a बहुत सफलता physical way also, आप you अपनी will सफलता receive a देख lot of पाएंगे। success in your life. ऐसा अभ्यास दिन में कई Definitely. बार करें। So बहुत do आवश्यक है। this kind of practice many times throughout the day. This is what is needed. Om Shanti.